Now, Maharashtra continues to be the worst affected state from coronavirus. The state has reported this year's highest single-day spike of coronavirus cases. A staggering 17,864 new cases reported on Tuesday alone. This was the fifth consecutive day that Maharashtra reported an excess of 15,000 cases. The death toll in the state increased to 52,996 as the state recorded 87 new fatalities just yesterday. Mumbai, Pune, Nagpur reported more than 1,900 cases on Tuesday. Mumbai reported 1,922 cases. Pune recorded 1,954. Nagpur recorded 1,951. Aurangabad at 860. And Yavatmal recorded 435 cases. Earlier, central government reports stated that Maharashtra is witnessing a second COVID-19 wave and instructed the state government to implement strict containment strategies here, strengthening surveillance and increasing testing to contain the spread of this virus. एक्चुअली पब्लिक को फॉलो करना चाहिए, मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह, सोशल डिस्टेंस रखनी चाहिए। मोस्टली लोग मास्क वगैरह पहनते हैं और फॉलो कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। बाकी आज की तारीख में तो लॉकडाउन करना बोलो तो बहुत मुश्किल वाला काम है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। पहले जो स्टार्टिंग में था अप्रैल में, मई में, वो माहौल अभी नहीं है। बॉम्बे नहीं, ऑल ओवर इंडिया में वो माहौल तो नहीं है अभी फिलहाल। देखिए, लॉकडाउन लगाना अभी मुंबई में फिर से ठीक नहीं है, बिकॉज एज अ लोअर ग्राउंड, मतलब जो लो लेबर क्लास काम करता है उनको इस लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ होती है। बिकॉज ये जो महाराष्ट्र में भले केस बढ़ रहा है, तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है गवर्नमेंट को वैक्सीनेशन पे ज़्यादा काम करना चाहिए। लॉकडाउन इज़ नॉट एन सोल्यूशन। इससे 6 महीने से ऐसे इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब है और फिर लॉकडाउन लगाएंगे तो महाराष्ट्र की ऐसे तो इकोनॉमिक रिकवर नहीं होगी, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। If one has to understand the COVID situation in Maharashtra state, let's look at the figures. Yesterday, India reported about 29,000 COVID cases, out of which 18,000 cases were just from the state of Maharashtra. And hence, the center is keeping a close eye on the developments in the state. The Health Ministry of Maharashtra is asking to vaccinate all so that these cases can be avoided. Maharashtra is said to be on the brink of a second wave. There are about 1,922 cases which were reported from Mumbai yesterday with 4 deaths. The continuous rise of COVID cases in Mumbai is also a cause of concern because this megapolis, the financial capital of the country, could see some restrictions in the coming days. With camera person Mangesh Ambre, Mustafa Sheikh in Mumbai for India Today. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.